Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour, you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks and slips and all the pot-balling chatter, and everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. एक अवार्ड्स नाइट पर ऋतिक और मलाइका के साथ करण जौहर की मस्ती और बाकी सेलेब्स के स्टारी अपीयरेंसेस इन्हें लाए इन फोकस। सलमान की बहन अर्पिता की मेहंदी सेरेमनी पर शाहरुख पहुंचे सलमान के घर। दोनों ने एक साथ दी अर्पिता को ब्लेसिंग्स। हैप्पी एंडिंग को प्रमोट करने एक ही दिन में दो अलग अलग इवेंट्स पर आए सैफ और इलियाना, किया सबको जमकर एंटरटेन। लेकर चलेंगे ऐश अभिषेक की डार्लिंग डॉटर आराध्या के 3rd बर्थडे सेलिब्रेशंस पर। बॉलीवुड की लेटेस्ट बसंती श्रद्धा कपूर ने लॉन्च किया एक नाइट क्लब। करण जौहर की मलाइका के साथ मस्ती। I just pose and pout. That's what I do for a living. And I thought that's what I do for a living, but it's okay. Well, you have tough competition. You pose, pout, and do a lot more. करण की ऋतिक रोशन से छेड़छाड़। This is as boring as it gets. Then I'm sitting, and so are you. You want me to come a little closer? I don't mind. You do what you want. It's up to you. I'm just your muse. Play with me. वेल मौका था रिसेंटली हेल्ड एक मैगजीन की अवार्ड्स नाइट का, जहां करण जौहर, ऋतिक रोशन और मलाइका के अलावा करीना कपूर, फरहान अख्तर, फराह खान, हुमा कुरैशी, लीसा हेडन और कुछ और गेस्ट्स भी मौजूद थे। सभी यहाँ या तो अवार्ड्स देने या फिर अवार्ड्स लेने के लिए आए थे, लेकिन ऑन स्टेज सबसे ज्यादा मस्ती के मूड में थे करण जौहर, जिनकी मस्ती नजर आई पहले तो मलाइका से अवार्ड मिलने पर। Please welcome on stage the winner of this category, the absolutely wonderful Karan Johar. For me to be on the cover on the women empowerment issue was like my final dream come true. It was my bucket list right on top. So I was finally the Vogue cover boy, stroke girl, whatever you call it. And I'm really, really excited to win this honor and to get it from you, Malaika, whose certain body part walks in before you do, is a very big honor. How would he know that? Karan, Darling, you're used to I know everything about the posterior. You're very used to sitting about. Okay. You're used to sitting on a couch. Why don't we try this Shall we? high chair for a All right, moment? okay. Well, that's all I can do is plonk. Lovely. You have scripted questions? What would you like? Whatever you Scripted. want, Malaika. I Off can my offer head. you very little. You've come a long, long way, Karan. You've made some of the most amazing films. You've been extraordinary. What motivates you to fly beyond? Fame. I was 15 years old and there was an elocution competition that I won in school, and I still remember I won the gold medal, and I looked at the crowd and there were about 200 students, and at that point I said, my God, I want to be famous, and I want people to know me when I grow old and I grow up, and I want to be famous. That was my biggest motive to make movies. It wasn't for any kind of creative excellence, it was to be famous. I'm one of those few people who will admit that I Google myself once every 2 days. I want to tell you, besides the only moment I once had outside Selfridges in London when there was a very sweet Gujarati couple that actually waved very furiously towards me, and I was rushing to catch a flight. So I said, very quickly, and they very quickly gave their camera and posed. That's when I realized that some of us are completely deluded about our place in life in the world. There is a large section of people who don't know what the hell we do. Well, you can forgive them. Well, Karan, you've directed so many films. Is that one film that you wish you had directed? Lagan, because I wanted to be at that Academy Award presentation. I was so upset
I love the film, but it's not really about the film. It's about the fact that Ashutosh made it to the red carpet. And I'm obsessed by the Academy Awards. I don't want to say that, oh, what does the Academy Award mean to me? It means a hell of a lot to me. Yeah? I want to stand on that stage and say, I love you, Meryl Streep, because she's always in the front row. And I want to say, this one's for you, India. और फिर ऋतिक रोशन को अवार्ड देते हुए Probably the most gorgeous man in this room tonight, ladies and gentlemen. His last released film truly makes most women do exactly the same. Please welcome Hrithik Roshan. Karan, I am nervous now because I have a feeling you're going to ask me some couch questions. No, they're not so bad, Are you actually. going to stand or sit down? What do you want to do? With you? I mean, I have another choice, but it's not on the menu. I think we should start the conversation wherever you want to sit. Let's just begin. Well, okay. Okay. This is as boring as it gets then. I'm sitting and so are you. You want me to come a little closer? I don't mind. You do what you want. It's up to you. I'm just your muse. Play with me if you Okay, like. let's just stay safe. And is there a woman you're tremendously and immensely attracted to? A woman? Yeah, I am attracted to all women, lovely. especially now. Something has just changed. I don't know what it is, but yeah. So you think your newly acquired eligible status has just made you love women even more? I just know that I'm not going to sing aloud. No? No. It's no more singling out. It's just, Well, that gives a lot of hope to a lot of beautiful women I know in this It's a room. challenge, and dude. otherwise. As I said, outside my comfort zone, I'm stepping out, just going to explore. वैसे करण के अलावा स्टेज पर मस्ती मजाक तो फराह खान ने भी किया जब उन्होंने अपने कजिन फरहान अख्तर को दिया बेस्ट एक्टर का अवार्ड The award for the best actor goes to my cousin Farhan Akhtar. Is it true that the film that truly inspired you in your childhood was a movie called Kranti by Manoj Kumar? I love that film. I used to wake up. I was probably one of the few children who woke up before their required wake-up time to go to school. So if the alarm went off at 7, I'd probably be up by 6. So Watching Kranti, so we are I would witness get up, to it. get ready, quickly get into my uniform and sit and watch maybe an hour of Kranti before I left for school. And is that what inspired Dil Chahta Hai? Kranti. Well, to a certain extent it was. It was a Kranti against the cinema that was going on at that point. So I guess it was. लेकिन by the end of it, Farah's puppet dance seemed to be a flop. I actually want Farhan to tell you all about his earliest inspiration, which was Madame Fifi. I can't say. I leave that to Zoya and Farah, who have made it a point that no matter where they go, they will make me awkward about- and embarrass me with this story. Madame Fifi is I was a child. Farhan's I alter didn't know any ego. better. We used to dress him up in Zoya's dress, like a frock with heels and a hat, and put lipstick on him, and then he would wear long pearls of his mother, and he would come walking like this and say, "Hi, I'm Madame Fifi." And dance to Ye Mera Dil Pyar Ka Deewana. Do you want to do that now? No, Sure. no. Okay, then shall we do the puppet dance If for you everyone? want me to. There was also a puppet dance that Farhan and me had invented. I think we shall give you one little jhalak of it. Just puppet to- dance. Of the puppet dance. I We'll think quite they want to spoil it move for on all other with- award winners. Yeah, they'd like to move on, I think, Farah. Okay, so no puppet dance, So Karan? we'll just puppet dance our way out off Okay, stage. then take your award. इनके अलावा करीना कपूर को भी यहाँ मिला एक अवार्ड एंड ड्रेस्ड गॉर्जियसली करीना ने ये अवार्ड मिलने पर दिखाया अपना एटीट्यूड Seth's going to be really happy because he loves martinis. So, considering he was like, oh God, you're going to another award function, not another award. I was like, yeah, but he's just going to be so excited because it's not an award, it's a martini glass, Seth. Tell us, what is the single most defining moment that you feel in your career? Well, I think it was two roles that clearly defined me. One was Chameli. A lot of people, including my own parents, thought that I couldn't play a prostitute at the age of 22, and that too from Kamatipura. My father practically died of a shock when I accepted the role. Of course, then in 2008, which was
jab we met, which I'm still trying to kind of get over that Geet image because, I mean, it's difficult to just, you know, everybody just sees me as that typical Punjabi girl, and after a point it is annoying. हाँ, few others like Lisa Hayden और मनीष मल्होत्रा ने काफी मॉडेस्टी के साथ एक्सेप्ट किए अपने अपने अवार्ड्स। यानी ऑल इन ऑल ये अवार्ड्स नाइट रही द स्टारी एंड द नॉटी बी टाउन स्टार्स के नाम। सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई। Hello, brother. Hello, brother. अर्पिता की मेहंदी सेरेमनी पर सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे को कहा हेलो ब्रदर। Hello, brother. Hello, brother. जी हाँ, कुछ ऐसे ही भाइयों की तरह बेहद प्यार से शाहरुख और सलमान ने अपनी प्यारी बहन अर्पिता को दिया उनकी मेहंदी सेरेमनी पर आशीर्वाद। शी इज़ लाइक माई सिस्टर, आई हैव सीन हर फ्रॉम चाइल्डहुड। उनके साथ हमारा जो घरेलू रिश्ता है उसके अंदर कोई इनवाइट की भी जरूरत नहीं। अर्पिता को मैं गोद में खिलाऊं बचपन से, सो आई 100%। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि अर्पिता के लिए ये मेहंदी सेरेमनी कितनी स्पेशल रही होगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मेहंदी सेरेमनी के लिए हुए डेकोरेशंस और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पहुंचे उनके फैमिली मेंबर्स की एक खास झलक। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कह सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां। आने वाले हैं सैया, थामेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कह सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को लेकिन नेवरदलेस ब्राइड टू बी अर्पिता के लिए इस सेरेमनी का सबसे स्पेशल मोमेंट तो ऑफ कोर्स यही रहा होगा। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां। आने वाले हैं सैया, थामेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई। थोड़ा डांस, नचो सारे जी फाड़ के। थोड़ी मस्ती, अगर आपका और करीना का कॉम्बो होता तो उसके अंदर जो स्टाफ्स होते वो घर की कॉफी होती है। वेल हैप्पी एंडिंग प्रमोशंस आर ऑन इन फुल स्विंग। पहले मुंबई के एक कॉलेज फेस्टिवल में और फिर एक कॉफी शॉप पर सैफ और इलियाना दोनों ने मिलकर किया हैप्पी एंडिंग का एंटरटेनिंग प्रमोशन। नचो सारे जी फाड़ के। 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 शुरुआत करते हैं इस कॉलेज फेस्टिवल से जहां सबसे पहले पहुंचे सैफ। नचो सारे जी फाड़ के। सैफ ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हैप्पी एंडिंग के सॉन्ग पर ये छोटी सी परफॉर्मेंस दी। नचो सारे जी फाड़ के। नचो सारे जी फाड़ के। And after a little while, Ileana too joined in the fun. नचो सारे जी फाड़ के। सगरा तू सगरी हूँ मैं, या हम दोनों हैं सही और सगरे हैं सारे। बैगी बैगी मैं, बहका बहका तू, बहके बहके लग रहे क्यों आज ये नजारे। चल let's dance, ready to dance, आने वाला है खाने का।
इस डांस सेशन के बाद अपनी फिल्म में ब्रेकअप्स जैसे इशू को सेलिब्रेट करने के रेलेवेंस को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया सैफ और इलियाना दोनों ने। Happy Ending is also celebrating breakup day on the 18th, if I'm not mistaken. What is that all about? Normally when a girl and guy break up in Hindi films, there's a sad song, and it's all very serious. But this being funny, we have a comic song called Paji Tusi Such a Pussycat, right? So we thought it'd be entertaining to kind of celebrate breaking up rather than getting very depressed about it, because it's also the beginning of your life in many ways. It's not the end. How many of you guys have gone through breakups? Arre baap re, everybody. How do you deal with breakups? Oh, well, you know, you cry for the first day and then the second day you just abuse the guy and move on to the next one. फिर दोनों ने अपने फैंस को डिस्ट्रीब्यूट की फिल्म की म्यूजिक सीरीज। क्लिक की सेल्फीज। Do you guys have class now? I hope not. Thank you, you've been lovely. और इसके बाद ये दोनों निकल गए नेक्स्ट इवेंट के लिए, जहां सैफ और इलियाना ने एक कॉफी शॉप पर लॉन्च किया हैप्पी एंडिंग से इंस्पायर्ड एक मेन्यू। It's a really good menu that we've got here. I'll share mine in a second. So we've got Saif and Ileana, which is a cappuccino with cupcake. And Ileana says I'm the cupcake and she's the cappuccino. Yeah, he's the like that. cupcake. Okay. And there's a Govinda and Saif, which is sandwiches, tandoori chicken sandwiches. So we know what Govinda is. Yes, yes. It's tandoori Oh, chicken. it's tandoori chicken. अगर आपका और करीना का कॉम्बो होता तो उसके अंदर जो स्टाफ होते वो घर की कॉफी होती है। Slip fielding. वैसे पता नहीं क्यों इस इवेंट पर सैफ थोड़े इरिटेटेड मूड में नजर आए, क्योंकि यहाँ होस्ट की सारी रिक्वेस्ट्स को फुलफिल करने में सैफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। Saif and Ileana, before we move on, can we have you to perform for us the hook step from the song G-Party? We have a few lucky CCD customers with us, Okay. so we'll get them with us to do the hook step. No, forget the hook step. Just say hello. जी हाँ, सैफ वॉज इन नो मूड टू परफॉर्म अ स्टेप, और तो और अपने रोल से जुड़ी डिटेल्स शेयर करने में भी सैफ वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड। Can you please tell us a little about your role in the film? We'll start with Ileana. I don't think we should tell anybody about the role in the film anymore. We should just say that the film's releasing on the 21st. इवन सैफ तो मीडिया के सवालों को भी अवॉइड करना चाहते थे। All right, we will now open the floor for questions from the media. Who? If any. Who is going to ask? There's only photographers here. Are the media also? वेल लगता है बैक टू बैक प्रमोशंस से सैफ थोड़े बोर हो गए हैं, एंड ही वाज इन अ हरी टू जस्ट गेट इट ओवर विद। वेल जो भी हो, गुड लक टू देम फॉर द फिल्म दैट रिलीजेस ऑन द 21st of November। वो नच्चो सारे जी फाड़ के हिल के नाचो नाचो हिल के नाचो नाचो हिल के नाचो। ओए हैप्पी बर्थडे टू यू। अभिषेक और ऐश्वर्या ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपनी डार्लिंग डॉटर आराध्या का 3rd बर्थडे, और इस मौके पर कौन कौन से बी टाउन सेलेब्स शामिल हुए इनके सेलिब्रेशन में, अलोंग विद देयर किड्स, लेट्स टेक अ लुक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। और बन्नो 16 सालों का टीका लगा तू। ओए बच्चू तेरे बचपन का बीमा करा तू। उम्र चढ़ती रहेगी, साल घटते रहेंगे और होती रहेगी गुफ्तगू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे समझे मगर बस आशिकों पे रहेगा रिव्यू। Come on, dance. Dance. एक नाइट क्लब को लॉन्च करने आई बसंती, और बॉलीवुड की इस लेटेस्ट बसंती के साथ थे उनके बड़े भाई सिद्धांत कपूर, जिन्हें सपोर्ट करने आई थी श्रद्धा। हर लिमिट की हाइट पे चढ़ गए।
the launch of this really new club, really great new club, and my brother's organizing the event. I just saw the club. बहुत ही बढ़िया club है. It's a good, what do you call it, night club, which is very inviting, I would say. आशिकों से डील तू करके डांस बसंती, डांस बसंती, डांस बसंती। वैसे यहाँ बसंती ने डांस तो नहीं किया, लेकिन ये बसंती यहाँ बिल्कुल पार्टी के मूड में नजर आई। As she looked all dressed up, ready to party. वैसे श्रद्धा के अलावा इन यंगस्टर्स को कांग्रेचुलेट करने आए हैप्पी न्यू ईयर फेम विवान शाह, who posed happily for the Shutterbugs. और विवान ने जहां मीडिया के लिए काफी देर तक पोज किया, वहीं एक ऐसे स्टार किड भी थे जो मीडिया से शर्माते हुए चुपचाप चले गए, और वो थे सनी देओल के बेटे करण देओल। Anyways, coming back to श्रद्धा, वो तो बस इस नाइट क्लब की तारीफें ही किए जा रही थी। Very inviting, I would say. So I'm sure that a lot of youngsters are going to come and have a great time here. So all the best to Ashish. Thank you, Shraddha. And I'm sure it's going to be a big success. Thank you so much. Well, श्रद्धा, आपकी इन बातों ने इन यंग एंटरप्रेन्योर्स का हौसला तो जरूर बढ़ाया होगा। And we are sure इस नाइट क्लब में और कोई सॉन्ग बजे ना बजे, पर आपका ये गाना तो जरूर बजेगा। ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती, स्मिता एल जिंग, मुंबई। हर लिमिट की हाइट पे चढ़ गए डांस बसंती, डांस बसंती, डांस डांस डांस। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.